Welcome you all to the class. Good morning. So here we were discussing yesterday about lines and angles, and particularly we were talking about different types of lines where we would do. One was intersecting lines, and when we talk about intersecting lines, we learned that we could form two different types of angles. That is linear pair of angles and vertically opposite angles, isn't it? And then we can find out the remaining three if we are given with one. That we will see today how to solve the sum. Later on, we learned about parallel lines, and if parallel lines has a transversal, we learned that we could see different types of angles and we divided them into three different pairs of angles, isn't it? One was corresponding angles, second was alternate angles, and the third was integer angles. And today we are going to learn more about this. So let's see how it is done. As I told you before, I expect that you have revised yesterday's lesson, otherwise you will be totally blank. So please always make the habit that you revise the concept. Okay, once you see the lessons, once you're live with me, after that one more time you go, you see this lesson so that you capture the things in your mind quickly. Fine. Now we are going to discuss about, you could see a diagram, but that we will be taking it later on. Yes, you can start solving the sums which are related to my explanation. But before that, just wait for a day, because before Thursday, I will send you the notes. Definitely, I'm working on that. And this geometry concept, it takes lots of time for typing. Okay, so just bear with a day, and then you can start Wednesday evening onwards. You can start doing the homework. Now here, we are going to do today the basic ones. Okay, I'm not going to start with any complex questions today. I'll be just focusing on the solving part of the sums. That is numericals. That is what we say, finding the angles, measurement. I'm not going for the proving questions today, right? So we move on to very simple concept. So you get a time of tomorrow, like a day, like Tuesday and Wednesday, when I start with the proof on Thursday. So by the time you should be thorough with these concepts, because we'll be starting with the proofs. And for you have to little work hard for the proof, right? Because it get complex and that geometry hype, I know that. Fine. So let's begin with the sum. A very simple question. Start. We are given the intersecting lines. Okay. You could have a pen and paper with you. If not, get it quickly. Nice to see you all. I think the morning is freshening up. Nice to see the numbers that you all are attending the class. Thanks a lot for it. Okay. And I hope that you have benefited from the lesson. You're not here just because of the attendance. Okay. Now, looking at this, let's start. Say this is PQ and this is RS. So these are PQ and RS are two intersecting lines, so meeting each other at O. Fine. And if I take this angle here, S is 75 degrees. Fine. I take this angle POS, if you can't see clearly. Angle POS is equal to 75 degrees. We have to find out the values of X, Y, and Z. Fine. Now here again, I would just like to remind you one thing. Only one important thing, that you could find it directly, but you have to reason out. The marks are being carried in reasoning also. So be careful that you reason out. That is explanation. Matlab ki how I use you, how you finding this angle. Now you know this. What are these pair? Up and down. Yes, vertically opposite angles. So directly, if the values are written that way, or you can go systematically. Okay, angle POS is equal to angle ROQ. Why? This is the reason. Simple. The name itself is a reason. Yes, vertically opposite angles, and therefore POS, that is 75 degrees, is equal to Y. That is Y is equal to 75 degrees. So we got the one value, Y, right? And now we can find out the sum many ways, right? So like here, look at this pair. RS is a line. So does it make straight angle? Straight angle, adjacent angle. What do we call them as? Linear pair of angles. So using linear pair of angles concept, that is angle
ROP plus angle BOS is equal to 180 degrees. How? Linear pair of angles. You need to write down the whole reason for this. Okay, this is important. It carries marks, at least half marks for reasoning. And then you know angle ROP, that is 180 minus BOS. And how much is 180 minus BOS? That is 180 minus 75. So this is 105. Okay, and now once you have ROP, that is X is 105. Now we are left with Z. So you can take help of Y, you can take help of X, you can take up to 75 degree anywhere. Either linear pair or the easiest, which is the easiest, vertically opposite. X is equal to Z. Just now what we did, X is equal to Z, vertically opposite angle, and vertically opposite angles are equal. So our Z is also 105. So similarly, just two lines you have to write like two small statements. That's it. I hope it's quite easy for you. Very simple. 1 mark question. Very, very simple for you to understand it. Right? I hope that is very clear to you. And now I go on with parallel lines. Fine. I hope this is clear to all of you. And any doubts are there, please you be open to connect with me through WhatsApp also. If not here, because we have the limited time, so you can be connected to WhatsApp and you can ask your doubts. I always try that I answer you. Sometimes it is delayed, but I try to answer it. Okay. So now we move on to parallel lines question. So finding the different angles, right? We are discussing about finding angles when one is given to you. First of all, they don't ask you so many angles. Here I'm discussing all the all angles, but generally they don't ask you because you have the question maximum one or this kind of question is maximum 2 marks question. So 1 or 2 angles are asked to you. At maximum 4 angles are asked to you. Fine. So suppose you are given with this as 55 degree. Okay. So you're given with 55 degrees. Suppose you have to find out this X, you have to find out Y, and you have to find out Z, and you have to find out this W. Okay, you have to find out 4 angles. Okay, now how we are going to use it? Before starting this, I'll give you a quick recap of the angles. Look here, everyone. Okay, when 2 lines are there and the transversal is there, which are 9 intersect what we call it as a transversal, right? And when we do this, we get 3 different pairs of angles which we are discussing. Upper with upper on the same side, we call them as corresponding angles. Lower with lower, so D with H, B with F, and C with G. So these pairs are equal. That is, and these pairs what we made are nothing but corresponding angles, and they are equal in their measurement. Remember? Then second, I taught you about alternate angles. That is Z shape. You could remember this or this. When you make this Z, you get 2 angles, and again they are equal. So you could see the Z part over here. So D is equal to F, and C is equal to E. This makes the pair of alternate angles. And lastly, interior angles. So inside, between 2 parallel lines, which are the angles? So D with E and C with F. And here if it's different, that their sum is 180 degree. And C plus F. You could see here C and F inside. Okay, so using this concept, so we have to find the value of these angles. Okay, that is corresponding angles you have alternate angles and interior angles. And along with this, definitely you can use vertically opposite angles and linear pair of angles also. Now look here, 55 degree. Now again, as I told you, because we have so many options with us, we can find out this angle in many different ways. You can take the concept of vertically opposite first and then linear pair and then corresponding or alternate. Or I can start with first corresponding, then alternate, and then linear pair, and so on. So it can happen that your steps and my step may vary. Okay, but that doesn't make the sum wrong unless your calculations are correct. I start with the corresponding angle and try to make use of this concept because we need to learn here. So here, look up with
ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, ऑन द सेम साइड, एंड therefore I will say y is equal to 55 degree by corresponding angles. ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज आई एम राइटिंग दिस, इट इज गिवन टू अस दैट L is parallel to it. चलिए ये चीज भी एक नोट कर लीजिए ताकि जब मैं आगे जाऊं आपको कुछ एक्सप्लेन करूं so you don't get confused. It's given to you here that L is parallel to L. The lines are parallel, and when the lines are parallel, how to find different angles? ठीक है, तो ये दोनों हो गए कनेक्टेड. चलिए हमारे पास एक आ गया. अब हमें फाइंड करना है ये, could you see this part? कौन सा है? Z, and Z means what? Therefore, x is equal to y. क्यों? Alternate angles. Z बनाता है. Z हमेशा alternate angles बनाते हैं, and that's why again the measurements are equal, and therefore x is also equal to 55 degrees. And now look at x and w. X and w क्या है? Right? Look at inside it, an interior angle. So x plus w is equal to 180 degrees, and therefore w is equal to 180 minus x. इस तरफ गया तो, और x कितना है हमारा? 55. So 180 minus 55. How much it is? 125. Am I right? It is 125 degrees. Okay. And the last one which are left. Now here this Z again you can find out with many ways. But I'll go with corresponding angle concept, down with down. And therefore Z is equal to x corresponding angles, and hence Z is also 55 degrees. ठीक है? Again I told you, you could use your vertically opposite angle, you could your linear pair concept, you could use your vertically opposite angles. You can do that. So anyway, you can find it out the angles in many different ways. But the thing is, the sum has to be correct, the calculation has to be correct. Instead of 125, you write 115 and go on with the sum. Obviously, it's wrong, right? So be careful about that. Now, these are very simple questions. अब ये समझ में आ रहा है. I hope this is clear to everyone. But देखिए, when I am doing this, it's quite easy. It's very easily understood also because यहाँ पे कोई complex नहीं है, कुछ different difficult form नहीं है. Right? But I just want you to do yourself. एक बार और इसको आप देख लीजिएगा. The ones who are learning, especially the ones who are learning it for the first time, ठीक है, जो थोड़ा सा अपना मैथ्स में कम पड़ जाते हैं हमारी मेहनत के बाद. I request you that you go through the lesson once again. हमेशा याद रखो कि आप लेसन 2 बार करो. YouTube पे लेने का फायदा ही वही है that you can watch as many times you want. ठीक है ना, मैं इसीलिए ले रही हूँ. So that you watch it again. And दूसरी बार जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर, आप मेरे साथ साथ you can also answer, right? और जब थर्ड टाइम जब आप खुद से करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है. माइंड में सेट कर लो ये पैटर्न को. Why I'm saying it? Because I'm going to the another sum which is totally reverse of this. ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि we can find out this. Okay, what I told you, we can find out this when it is given to us that L is parallel to it. Suppose अब मैं रिवर्स में जाती हूँ क्वेश्चन को, एंड बिफोर दैट वी हैव सम स्मॉल एक्सप्लेनेशन जिसको आपको प्रूव नहीं करना है. ठीक है, प्रूविंग पार्ट नहीं है, बट वी हैव टू डील विद द सॉल्विंग पार्ट. सो काइंडली पे अटेंशन. व्हाट इज इट? हमारा, मैंने कहा आपको एक चैप्टर ऑलरेडी सीबीएसई ने पहले ही डिलीट कर दिया है. दैट इज अबाउट द चैप्टर 5 Euclid's division, Euclid's properties. Okay, जिसमें सारे axioms, आपने यदि टेक्स्ट बुक खोली हो तो आपने एक वर्ड देखा होगा axioms, lemma, सारी चीजें. What does that mean? Okay, तो axioms को हम कैसे लेते हैं कि जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है statement, okay, which is universally true, जिसको हम कहते हैं ना कि true. Whereas theorem, या तो प्रूव करना है आपको कुछ, तो थियोरम है कि आपको प्रूव करना है, कुछ आपको दिया हुआ है और कुछ आपको फाइंड करना है कि क्या ये ऐसा होगा. ओके, तो एन एक्सियम जो है उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे, जिसको हम मान के चलेंगे कि ये सही ही है. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पे जब हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, लाइक वी आर गिवन विद टू पैरेलल लाइंस, से L is parallel to M and this line say P. Okay, P is a transversal to line L. ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया that we get the pair of corresponding angles. Fine.
Please remember, when lines are parallel, corresponding angles, alternate angles, and interior angles are made. That is, we obtain the pair of these type of angles. But मैं उसके reverse में जाती हूँ. I go with the reverse concept that I don't know whether these lines are parallel or not, but I'm given that this angle is 60 degree and this angle is 60 degree. Okay, say this angle is 60 and this angle is 60. So when if I name all these, say M, N, Q, P, A, C. So look at this angle. What is the name of this angle? P, M, N. What is the name of this angle? M, A, B. So what do you say? Up with up. You will say that yes, angle P, M, N is equal to angle M, A, B. Could you say this? Right? You are given equal. You are not aware whether the lines are parallel or not. But if, I mean to say that why I'm saying this. If these pairs of angles are equal, because you can see the pattern is about corresponding angles, right? So that means these two angles are making the pair of corresponding angles and they are equal also. Hence, I can say the lines are parallel. समझ में आया? जैसे आप इसको कहते हैं मैथ्स में कहते हैं और ज्योमेट्री में कहेंगे कॉन्वर्स, जिसको हम रिवर्स कहते हैं ना, उल्टा स्टेटमेंट. I am the teacher of my student. Okay, so my students, you all are my students. So naturally, for you, like some relation, like I am the teacher, and I'll say, okay, my students. We two are related to each other, but when we use in reverse concept with reference to the concept, like your mother and daughter. So when mother is talking, she will say she is my daughter. Whether his daughter is talking, she will say she is my mother. Two are related, but reverse statement is there, and this reverse statement we call it as a converse. ठीक है? तो जैसे कि पहले मैंने क्या बताया, when the lines are parallel, corresponding angles are equal. अब इसका उल्टा, suppose you are given the pair of angles which are making corresponding angles and they are equal, then you will say the lines are parallel. तो यहाँ पे converse भी true होगा और इसको हम कैसे कहेंगे? So now यहाँ पे आपको question कैसे पूछा होगा? Check. Please listen. यहाँ पे आपको question कैसे दिया होगा? या तो दिया होगा check या तो दिया होगा वेरीफाइड. और आपको पता है ना, हमेशा इस चीज को मैं बताती हूँ, वेरीफाइड दिया हुआ है. तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? सिंपल है, 2 लाइन का, ये कुछ ज्यादा नहीं है. एंगल पी एम एन is 60 degree, angle MAB is 60 degree, and therefore angle PMN is equal to angle MAB, and therefore converse of corresponding angle test. ये रिवर्स टेस्ट हो गया कि जब x इक्वल है and therefore lines are parallel to each other. यहाँ पे आपको ये क्या पूछेंगे? चेक whether the lines are parallel or not. समझ में आ रहा है? तो यदि आपको corresponding angles दिए हुए हैं तो आप कहेंगे, and suppose मैंने यहाँ पे 60 की जगह पे लिखा होता 75 डिग्री, तो आप क्या कहते हैं? ये इक्वल नहीं है. ये इक्वल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का सेटिस्फाइड टेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको भी नहीं, ये लाइंस पैरेलल नहीं है. भले वो डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको ऐसे दिखा रहा हो कि ये काइंड ऑफ इक्वल लुक है, बट फिर भी आप कहोगे कि नहीं, ये पैरेलल नहीं है. सिर्फ डायग्राम को देख के आप जज नहीं करोगे. You have to bank on the data given to you. I hope I'm very clear to it. So such question comes for 2 marks also, where you have to verify whether the lines are parallel with respect to corresponding angle. तो यहाँ आपको reasoning क्या करनी है? By converse of corresponding angle test. Am I clear to all of you? I hope this is clear. और उसी तरीके से we have it for alternate angles and we have it for interior angles. That हमें reverse दिया होगा. Like we have to check whether the lines are parallel or not, and we are given with the angle, then we can use the converse test. जैसे कि यहाँ आपको same way, this is L, this is M, and P is a transversal. Okay, lines है, सिर्फ lines है. When you are given, say here this is 50 degree, okay, and this is also 50 degree, and they ask you check whether the lines are parallel or show that the lines are parallel.
तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है. That this angle, say this is A and say this is B. So you will say A is 50, B is 50, and therefore A is equal to B. And therefore, by converse of alternate angle test, lines are parallel. I hope this is clear to you. Yes, writing work again, I will be solving the questions, so you don't have to worry about what to write. But I hope you understand कि आपको लाइंस पैरेलल दी है तो एंगल्स फाइंड करने हैं, और यदि आपको एंगल दिए हैं उसके ऊपर से आपको लाइंस का चेक करना है कि वेदर इट इज पैरेलल और नॉट, तो आपको पहले ये लिखना जरूरी है. एंड द लास्ट वन विद इंटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट, जो बहुत बार आपको ये करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स से सपोज यहाँ पे if I say we are given with this, okay, say this is, यहाँ पे नेमिंग कर लेती हूँ Q R S. So what is the name of this angle? आप ये वाला एंगल का S Q R, angle S Q R is how much? 50 degree. Okay, and this angle, इसका नाम क्या है? Angle Q R T, 130 degree. यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 50 प्लस 130, दैट इज हाउ मच? 180 degree. And therefore, by interior angle test, lines are parallel. I hope this is clear to you. Yes, यहाँ पे इनका सम आपको 180 दिखाना पड़ेगा, और यदि इसका सम 180 नहीं आता, मैंने आपको पहले भी कहा कि डायग्रामेटिक फॉर्म आपको लुक कैसा लगेगा, बट सपोज मैं इसका कर देती हूँ 120 डिग्री, तो हमारा पूरा सम देखिए कैसे हो जाएगा 120, तो ये यहाँ पे 120, तो ये हो जाएगा 170 डिग्री. And therefore you will say by converse of, sorry, I just missed that converse word again, by converse of alternate angle test, they are not parallel. So you can say that for parallel lines, even the angle has to be in the perfect measurement. I hope this is clear to all of you. Yes, children? So basically, when lines are parallel, the pairs of angles are equal, that is corresponding and alternate, and interior angles are supplementary. दूसरी चीज जो आपको फोकस करना है, जैसे कि नेमिंग करने के लिए, ओके, 3 लेटर नेमिंग में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम सम सॉल्व करें तो आप उसको एबीसी दिखा के डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, उसमें आपने एक्स वाई जेड ले लिया या एबीसी लिख दिया, ओके, नेमिंग कर दिया तो भी चलेगा, फाइन. बट यदि जब आपको प्रूविंग है, so you have to be very careful for the naming part. So see to it, आपको तो पता ही है एंगल कैसे लिखते हैं. Yes, you all are familiar with angle. एंगल किस तरीके से होता है, इस तरीके से. तो हम इसकी नेमिंग हमेशा सपोज आई राइट दिस इज PQR, then you always take this angle as PQR. And if I write like this, and now suppose मैं लिखूँ ये PQR, तो ये गलत होता है. I hope you know it very well, right? Class 9 is expected to do it. So if some वो क्वेश्चन आपका वीक है, तो प्लीज 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 stop writing the comments, children. Please, मुझे अभी आंसर्स नहीं चाहिए. So stop writing it. Aditya, Anushka, please, patience. I hope this is clear for the naming. The ones who are a bit weaker for maths, so see to it कि ये आपके basic concept clear हो जाए. You should not, and generally बहुत बार ऐसा भी होता है कि in hurry, you know the concept और कुछ naming इस तरीके से घुमाया है, ठीक है, तो we are so used to that PQR, तो हम लिख देते PQR. But उस वक्त वो नहीं होता. Like here, for example, you know the name of the angle is PRQ, not PQR. So you have to be very careful for that. And the proving part आएगा, so you have to be very clear that naming हो. और या तो आपको confidence नहीं है, the easier way, which I said, आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और वहां पे ABCD या स्मॉल लेटर्स या XYZ वैसे नेमिंग कर लीजिए. So that will give you the easier way. या तो angle 1, angle 2, 1, 2, 3, 4 कर लीजिए, angle 1, angle 2, that is also allowed. Fine, so no issue for that. I hope this is clear to you. So I hope कि आपको parallel lines और intersecting angles में जो angles form हो रहे हैं वो सबको समझ में आया. So mainly when we talk about both kind of lines, you know that vertically opposite angles बहुत ज्यादा maximum time सारे use होंगे.
और ये आगे इसमें का बेसिक ऑफ योर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। फाइन, इसके आगे जाके अभी आपको दूसरे टाइप के सम्स करने होंगे, फाइंडिंग वैल्यू वाले भी सम करने होंगे, प्रूविंग वाले भी सम्स करने होंगे। सो बी अलर्ट। तो हमने जो सीखा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सीखे जिसका मेजरमेंट इक्वल होता है, और याद कैसे रखेंगे, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, पेयरिंग ऐसे होगी। देन लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का सिंपल याद रखना है वाई शेप। ओके, वाई शेप में जो पेयर बनेगी, जो स्लैंटिंग लाइन के ऊपर इस तरीके से, ओके इजंट इट, तो ये जो यहाँ पेयर बनेगी वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। फाइन, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैंने जैसे बताया अप विथ अप, डाउन विथ डाउन ऑन द सेम साइड, ठीक है। देन ऑल्टरनेट एंगल्स, तो जेड शेप बन रहा है, जेड या तो रिवर्स जेड, तो जेड के बीच में जो एंगल दो बन रहा है वो हमेशा हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। एंड द लास्ट इज इंटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट, ओके, जिसमें सम 180 डिग्री होता है, दैट इज इनसाइड। जब दो लाइंस पैरेलल होगी तो उसके बीच में जो ट्रांसवर्सर के पास जो बनेंगे, मतलब सी फॉर्मेशन हो रहा है, सी के अंदर जो दो एंगल्स बनेंगे, बस ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। सी या तो रिवर्स सी के में जो दो एंगल्स बनेंगे वो हमेशा इंटीरियर एंगल्स होंगे जब लाइंस पैरेलल हो तब, ठीक है। और उसका सम हमेशा 180 डिग्री, मींस दे फॉर्म काइंड ऑफ लीनियर पेयर, उनका सम 180 डिग्री होगा। आई होप दीज प्रॉपर्टीज विल बी रिमेम्बर्ड बाय यू। ये शेप्स या तो जैसे क्या है ना कि लाइक जैसे वो जिक्सॉ पजल होता है, या तो आपके पजल की लाइक यू नो कनेक्टिविटी, वो कनेक्टिविटी आपको मिलना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए, ओके पैरेलल किया है, ओके दिस विल बी, ओके। तो ये टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज आपको यूज करके, मतलब डायग्राम कुड बी बट डिफिकल्ट, जैसे ट्राइंगल के साथ कॉम्बिनेशन में पैरेलल लाइंस आ रही है, सो यू शुड रिमेंबर कि हाँ एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इट कुड बी करस्पॉन्डिंग, इट कुड बी इंटीरियर एंगल्स, और इट कुड बी अल्टरनेट एंगल्स। फाइन, तो विल डिस्कस मोर ऑन दिस सम्स। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ बिफोर आई रीच टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इट्स मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यू आर गिवन विद L, M, that is L parallel to M, and P is a transversal here, okay, and you're given with this angle, say X and Y, X is to Y as, say suppose 5, 7 is to 5, okay, you're given with, I'll make this smaller, okay, that doesn't make much difference here, 5 is to 7, we have to find out all the angles, say A, B, C, D, E, F. They will tell you x is to y is given 5 is to 7, then find the remaining angle or find x and y. तो अब इसमें आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो सारा पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ, ओके। सो यू नो दैट वी एक्चुअली वी यूज कौन सा, यहाँ पे x और y यहाँ पे, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आपका हुआ, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट, इजंट इट। एंड लीनियर पेयर में आपको क्या पता है, इनका टोटल 180 है, बट ये कैसे दिया हुआ है, 5 is to 7। एंड प्लीज याद रखिए जब इस टाइप से कोई एंगल्स दिए हुए रेशियो फॉर्म में दिए हैं तो आपको या तो रेशियो मेथड यूज करना है और या तो मल्टीपल मेथड यूज करना है। क्या, वो मैं सिर्फ याद दिला देती हूँ, जिस योर क्लास 7th और 8th रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 7:5, 5 is to 7 या 7 is to 5, तो टोटल कितना हो गया, 5 plus 7 12, ओके। तो x क्या हो जाएगा आपका 5/12 पार्ट हो जाएगा, ओके, और y क्या हो जाएगा 7/12 पार्ट, बट किसका, तो टोटल कितना है 180, तो 180 का 5/12 और ये 180 का दिस मच। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है आपका कॉमन मल्टीपल लेके, इट्स गिवन दैट x is to y is equal to 5 is to 7, so you will say therefore let x is equal to 5k, y is equal to 7k, ठीक है ना। तो हमने उसको k फॉर्म में लेके, and therefore 5k plus 7k is equal to 180 डिग्री। तो इसमें आप k की फिर वैल्यू फाइंड करोगे एंड देन यू सब्स्टिट्यूट हियर, यू गेट इट, जैसे हमने कल जो एग्जाम किया था वो इस टाइप से था। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर किस मेथड से आप कर रहे हो। Generally, this is comfortable to you. I know थोड़ा सा steps इसमें ज़्यादा जाता है, but you people are used to it, so you can go with this. Ratio is quick, so you can go with that also. दोनों 6, 7 की methods हैं, so I don't think so it is bit difficult for you. So I hope you get it. Yes, you are right. 75 and 105 सही है, ठीक है। और this could be given like this also. यहाँ पे भी ratio दिया हो सकता है. Say it's given that A is to D is equal to
say 2 is to and just take it as say 3 is to 6 or maybe 1 is to 2. Okay, 1 is to 2 दिया हुआ है. A is to D. तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? Lines are given parallel. तो यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके सेम वे let A is equal to 1K and B is equal to 2K. हम फाइंड कर सकते हैं K की वैल्यू and then we can find out the angles. I hope this is clear to you. So this type of angles will be, like, you know, this type of question could be where you find the angles. Okay, so I hope this is clear. Yes everyone. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं. मेनली सारे आपके टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. जो सॉल्विंग वाले न्यूमेरिकल्स हैं, आई वुड सेंड यू द डिफरेंट क्वेश्चंस आल्सो असाइनमेंट का. मोरोवर जो भी असाइनमेंट दिया जाता है दैट हैज टू बी सेंट इन गूगल क्लास. ओके, तो आप याद रखिए कि आपको गूगल क्लास में ही सेंड करना है ये चीजें. ठीक है, यहाँ वहाँ व्हाट्सएप वगैरह पे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा बिकॉज आई डिलीट एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज आई गेट सो मेनी मैसेजेस. जैसे आपकी हालत होती है वैसे ही हमारी हालत होती है. We're so used to WhatsApp तो कुछ ना कुछ उसमें आता ही रहता है and it goes on, you know, make the phone then the data used and, you know, unnecessary downloading I avoid. So I will not check your work if it is there. So kindly see to it. Okay, एक चीज और अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए. So basically if you see this question, अभी मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आएंगे थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड में, एंड स्पेशली दिस क्वेश्चन इफ यू विल सी दिस इज वन ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ओनली. ओके, थोड़ा सा मैंने नंबरिंग यहाँ पे चेंज किया है. वी हैव टू फाइंड आउट एंगल एक्स ओ वाई. जिसको आता है, आई डोंट वांट यू टू टाइप यू एंड राइट द आंसर्स हियर. आई जस्ट वांट यू टू सिट क्वाइटली एंड लेट्स टेक इट एज अ रिविजन फॉर यू. इट्स गिवन टू यू दैट MN is parallel to PQ. Please pay attention here. It is given that MN is parallel to PQ. You are given this angle here at x is 140 degree and this angle you are making here. You can see PYO is 35 degree. You have to find out angle XOY. अब जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जंप करते हैं पैरेलल लाइंस. बट आप देखोगे तो जहां ये XOY बन रहा है वहां कोई पैरेलल लाइंस नहीं है. और हमने जो सीखा है कि हमें पैरेलल लाइंस होती है तभी हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज और सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स बनते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है. और हम यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, we will draw a line parallel to MN. मतलब MN को ड्रॉ की तो ऑब्वियसली PQ को हो ही गई वो, isn't it? So we draw a line parallel to MN passing through O. O से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन लाइंस को पैरेलल होगी. तो जब मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ, सॉरी, I draw this something like this and this will be, say, I name it as AB. ठीक है, ये थोड़ा सा. And अब आप देखिए, अब हम उसके पास क्या आ गया, आगे पैरेलल लाइन. तो आप कहोगे MN से पैरेलल होने वाली लाइन थी, मैंने MN पैरेलल टू PQ है और दूसरी मैंने बनाई MN पैरेलल टू AB. कंस्ट्रक्शन से बनाई, ये कंस्ट्रक्शन है, ये गिवन है. ओके, maybe you can see them. Okay, तो ये हमें गिवन है. अल्टीमेटली ये हुआ कि तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो गई. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है, अब यहाँ पे MN पैरेलल टू AB, तो ये जो एंगल है, ओके, इसको मैं सपोज आई नेम इट एज x कन्वीनियंट के लिए, या तो 1. ओके, और जब 1 लिखो तो एंगल साइन डालनी, आई नो इट्स अ वैल्यू बट 1 इज इक्वल टू समथिंग वैलिडिटी होगा तो एंगल डाल देना. ठीक है, सो आई टेक इट एज एंगल 1 एंड दिस आई टेक इट एज एंगल 2. ओके, तो अब ये देखो 140 और ये 1 क्या बना रहा है, व्हिच काइंड ऑफ एंगल्स, सी काइंड ऑफ एंगल. सो इंटीरियर एंगल बनाएगा एंड देयरफॉर विल से MN पैरेलल टू AB, therefore angle 1 is equal to 180 minus 140 by interior angle. Next, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ because space यूज करता हूँ. So we get angle 1 as 40. You could write this way directly. जहाँ डायरेक्ट होगा थोड़ा सा शॉर्ट आपको यूज कर सकते हो. ऐसा हुआ तो definitely I would tell you. Okay, and now look at these lines. AB is parallel to PQ. तो हमने यहाँ बता दिया कि तीनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है. So PQ is parallel to AB.
ओके, तो अब ये कौन सा बना रहा है? Could you see this and this? और ऐसे आया मतलब z, तो क्या कहेंगे हम? Therefore angle 2 is equal to 35 degree. क्यों? Alternate angle test, isn't it? एंड अब आपके पास एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो कितना हुआ? एंगल x ओ y इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो कितना हो गया? 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, यानी कि कितना हो गया आपका? 75 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट। शायद रिटर्न बुक इतना क्लैरिटी से आपका नहीं जा रहा हो, बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड। हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया? ड्रॉइंग ऑफ दिस पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है? एंड देन यू गेट पेयर्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, अल्टीमेटली थ्री। सो टू पेयर, इसको और इसको पहली दो लाइन लेंगे और इंटीरियर एंगल टेस्ट विल फाइंड आउट द एंगल, एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल है, इसे लेकर वी विल फाइंड आउट दिस, एंड फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो वी गेट आवर रिक्वायर्ड एंगल x। I hope this is clear to all of you. Yes, I told you, I request you that please go through it once again, understand the concept, clear your doubts, और उसके बाद ही आप sum solve करना start करिए. I'll be sending you the notes as I said that by tomorrow evening I will definitely send it, but I request that आप don't be in a hurry to just solve this sum. Be clear that you understand, be clear that your steps to be perfect. देखिए, the problem is I can't go on checking the work, it is limited, and you know that how many hours we are spending on computers. For you also I can understand. तो ये सारी लिमिटेशन के बाद आपको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ, मैं बार बार ये चीजें बोलती हूँ, ग्रुप में भी मुझे बताना पड़ता है, चिल्ड्रन सेंड मी द सॉल्यूशंस। देखिए, आपको जब मैं सॉल्यूशन भेज रही हूँ, जब मैं आपको बोर्ड पे बता रही हूँ, तो आप एक बार और चेक कर लीजिए, व्हेन यू आर सॉल्विंग इट आप चेक कर लीजिए कि मैंने मैम ने कहा था वैसे ही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? आप नए नए आइडियाज लेके ना, दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू कैन शेयर द आइडियाज विद मी। आई एम गिविंग यू द प्रेजेंटेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, ओके? अब उसमें आप शॉर्टकट करते हो, ओके, एंड देन यू मिस आउट समथिंग इंपॉर्टेंट, देन यू विल बी द लूजर। सो बेटर डोंट एक्सपेरिमेंट, ओके? जो आप आपके ट्यूशंस में सीख रहे हो, यहाँ वहाँ आइडिया सीख रहे हो, डेफिनेटली ओके, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट ओके मुझे यहाँ से जो सिखाया जा रहा है वो ज्यादा परफेक्ट है, देन यू स्टिक ऑन दैट। I won't argue and I won't go on saying that do this, do that. From my side, I'm telling you this should be the correct way, and that's why I'm preparing the notes. I'm typing it and I'm doing extra work. It's up to you how you take it. So I'm not arguing with you if you send me that if this is okay with some other method. Okay? So please bear with it. Understand the importance of presentation क्योंकि यहाँ पे कोई orals नहीं है. Basically, your concept, your writing. बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो इट इन योर माइंड बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट, इसलिए बता रही हूँ कि मेक द हैबिट दैट यू राइट डाउन परफेक्टली, दैट गिव्स यू द क्लियर पिक्चर टू द एग्जामिनर दैट यस चाइल्ड नोज द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ओके? और ये मैंने कहा आपको बार बार ये कहती हूँ, व्हाई आर वी लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट? एक चीज आपको सिखा रहा है, परफेक्शन, ओके? सेकेंड चीज जो आप सीख रहे हो वो क्या सीख रहे हो? कहीं ना कहीं जब एंगल्स के बारे में, नो डाउट दैट हम घर में बैठ के मैजिकली के सारे एंगल्स नहीं मिलते, but it has vast application, okay? And that you will understand it once you grow up and you start applying the concept. But एक चीज मैं अभी भी बता दूं कि आप कहीं जिंदगी में भले नहीं यूज करो, geometry, the written presentation, the understanding will present you, will create the perfection habit in you. Fine. So have a nice day. We'll stop here. And with the attendance, I'm sending you the link in your WhatsApp also. Thank you.